110 उसके बाद किसी और कहीं खाली हो गया इसके बाद 12th का होता है वो लेगी क्या नाम है उसका संतोषी आपको क्या करना है कितना क्लास में एक बच्चे दोनों उधर वाले में कोई खाली बैठे सारा मतलब 2 बच्चे बैठे लगातार में Good morning, all of you. We started presentation software now. We started presentation software. अब क्या है? So many of students have submitted their that one project, but some of you, those who are offline, they are not being live in the class also. They are thinking that without submitting also they will get the mark. This is not going to happen. This is never going to happen. You must have to submit your projects to get the practical marks. Otherwise, you will get 0 out of 50. 50 mark का पेपर देना बस, ठीक है? And then you have to pass the exam. This is the clear message to all of you. All of you have to submit, and those who have submitted also. Today I will create that one assignment in the Google Classroom, and all of you, those who have submitted also, again you will submit in Google Classroom so that I will be having track of the students. मुझे पता रहे कि भाई किसने किसने सबमिट किया है, क्योंकि you are submitting ना, all of you are not submitting at once. So I am unable to keep the track of the students who have submitted and who has not submitted. So I am requesting all of you, those who have submitted earlier, you submit it again in Google Classroom. ठीक है? All of you are connected in Google Classroom. तो Google Classroom में फिर से भेजेंगे. Today I will create an assignment. ठीक है? जैसे assign करूँगा, you will get the message. So those who have completed, you submit, and those who have not completed, you take it in any way, suggestion or in other term also. But this is the suggestion for all of you that this is the compulsory project. On the basis of that only you will get the marks in your practical. So all of you must submit your projects. और बहुत मुश्किल प्रोजेक्ट मैंने नहीं दिया है कि आपसे बनेगा नहीं, ठीक है ना? Whatever problems you are facing, you ask me, I will solve it out. One of the students was saying कि उसका वो जो फॉर्मूला है that is not coming. तो बेटा मैं बार-बार बोल रहा हूँ आपको, ये सीट 1 हुई, सीट 2 हो गया, सीट 3 हो गया, सीट 4 हो गया, सीट 5 and सीट 6. Then seat 7 is the consolidated one. अब यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिखना है इस सेल में. आपने करना क्या है, कुछ मतलब बहुत बड़ा चीज नहीं करना है आपको. जिन सेल से उठाना है वो यहाँ पे आपके जो टाइटल बार होता है उसमें होता है सीट 1, सीट 1, सीट 2, सीट 3, सीट 4, सीट 5, सीट 6 and seat 7. So if you are working on this one, this will be highlighted as 7.
यहाँ पे इक्वल टू प्रेस किया बेटा आपने, ठीक है। देन यू हैव टू क्लिक ऑन शीट 1, इसको ओपन करना है, तो ऑटोमेटिकली दिस शीट विल ओपन इन लार्जर मोड, expanded mode on the screen, and from there you have to select this one. सिर्फ आपको इस सेल को क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली क्लिक करने पे आप यहाँ पे आपको सीट का एंड सेल का रेफरेंस आ जाएगा, ऑटोमेटिकली दैट रेफरेंस विल कम इन दिस सीट वन। अब उसमें क्या करना है, प्लस करना है, आपको प्लस प्रेस करना है। आफ्टर लीविंग दैट वन प्रेस प्लस, जैसे ही प्लस प्रेस करोगे ऑटोमेटिकली सीट 1 से सीट 7 में इस सेल में आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, सीट 2 पे क्लिक करना है, देन अगेन यू हैव टू डू द सेम, यू हैव टू सिलेक्ट द सेल। जैसे ही सिलेक्ट करोगे दैट रेफरेंस विल कम हियर आफ्टर द प्लस, अगेन यू हैव टू प्रेस प्लस, ठीक है। इस तरह से क्या करना है, एक एक करके सारे सीट्स को सेलेक्ट करना है प्लस प्रेस करने के बाद में, and at the end once this formula is completed, plus formula is completed, you have to press enter key. As you are going to press enter key, you are going to get the total marks in this cell in consolidated, ठीक है। आपको पूरे टोटल मार्क्स मिल जाएंगे, and that will not be having any problem, कभी भी किसी को प्रॉब्लम नहीं आ सकता इसमें। दिस इज टू इजी, इसमें कोई टेक्निकल टर्म नहीं है कि आपको दिक्कत होगा, ठीक है। यू ट्राई इट वंस मोर, आई डिडंट रिमेंबर द नेम बट वन ऑफ द स्टूडेंट हैव सेंड इट द क्वेरी कि उसको प्रॉब्लम आ रही करने में, तो यू करेक्ट इट, ठीक है। नाउ वी वर रीडिंग अबाउट द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, और इसमें जो मेन चीज है आपका वो है व्यूज। Every application provides different type of views to view the data in that particular application. जैसे Word में भी व्यू होता है, Excel में भी व्यूज होते हैं, व्यू टैब होता है, सेपरेट टैब, and that is used for viewing the document in a particular mode, ठीक है। अब इसी तरह पावर पॉइंट में सबसे ज्यादा व्यूज होते हैं, ओके। इट इज हैविंग 6 व्यूज to view the slides in different format, ठीक है। और इसके ऊपर क्वेश्चन भी आते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आएगा, एंड यू माइट बी गेटिंग द क्वेश्चन इन 3 मार्क्स आल्सो। अगर 5 व्यूज लिखने के लिए आएगा तो 5 मार्क्स में भी आ सकता है, अदरवाइज 3 मार्क्स में आता है या 2 मार्क पे आता है, ठीक है। अब देखो इसमें लिखा, इसमें दिया हुआ है कंपोनेंट्स, ठीक है। तो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द एप्लीकेशंस, ठीक है। जो मेनू बार होते हैं, दे आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ एनी ऑफ द एप्लीकेशन, दे प्रोवाइड्स ऑल द ऑपरेशंस इनसाइड इट। अपने अंदर में जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशन, अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट मेनूज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस आर बीइंग देयर इन डिफरेंट मेनूज, ठीक है। तो जो आपका कंपोनेंट होता है किसी भी विंडो का, द फर्स्ट वन इज टाइटल बार व्हिच इज शोइंग द टाइटल ऑफ द विंडो, द सेकंड वन इज मेनू बार व्हिच शोज द ऑप्शंस, टेक्सचुअल ऑप्शंस which is there inside a ribbon, that ribbon is known as menu bar. अब मेनू बार के जस्ट नीचे आप लोग आते हैं तो we are capable to see the objects, पिक्चर के फॉर्म में आप कुछ ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, whatever मेनू is highlighted, जो भी मेनू आपने क्लिक किया होगा उन मेनूज के जो ऑप्शंस हैं they are appearing in the form of toolbars, टूल्स के फॉर्म में अपीयर होता है, पिक्चर के फॉर्म में अपीयर होता है। बाय कीपिंग द माउस पॉइंटर ऑन द एनी ऑफ द पिक्चर इन द टूल बार, यू आर कैपेबल टू नो कि वो किस काम के लिए है, ठीक है। एज वी आर कीपिंग आवर माउस पॉइंटर ऑन दैट पर्टिकुलर ऑप्शन, अपने आप माउस पॉइंटर में नीचे आपको हेल्प खुल जाता है, एंड दैट इज शोइंग what that option is going to do. आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, उस पे डायरेक्टली क्लिक करने की जरूरत नहीं है। As you are going to keep the mouse pointer, that is going to show the help
ऑप्शंस, ठीक है, टेक्स्ट आ जाएगा कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट पर्टिकुलर मेनू, उसका काम क्या है. देन टास्क मैन, टास्क पेन, दैट आई ऑलरेडी डिस्कस्ड. टास्क पैन इज द लोएस्ट पार्ट ऑफ द विंडो, नीचे का पार्ट होता है, and that is also in ribbon form, and that is showing what are the work you are going on. जैसे हमने एक्सेल की बात करी तो एक्सेल में ये सीट्स को शो कर रहा है, and whatever sheet you have been open, in the same way in PowerPoint or this digital presentation, any of the software if you are using, the task pane is showing the current slide, कौन सा स्लाइड आप यूज कर रहे हो, that it is showing. Understood? Then toolbar में नीचे में होता है drawing toolbar, and it provides extra features which helps us to draw the things, ठीक है, in the application. अगर आप चाहते हो कुछ ड्रॉ करना या कुछ इमेजेस बनाना, तो that will be done with drawing toolbar. Then slide pan or bar. I told you in the last class only, left side of the window. जब आप PowerPoint open करेंगे, the window will be divided into two parts. ठीक है, default, and the figure which is in 1.3, that is showing the same thing. ठीक है, left side में जो window होती है, that is the smaller window, vertical window, and that is having all the slides in tiled form, छोटे छोटे आइकन्स के फॉर्म में वो दिखाई देता है. ठीक है, then work space or view button, that place is in the right corner of the window. जो आपका टास्क बार होता है उसके राइट साइड में होगा, विंडो के राइट बॉटम में होता है. ठीक है, दैट इज कॉल्ड व्यू पॉइंट. वहां से आप जो है, सबसे पहले तो वहां पे एक लाइन होती है, दैट इज कॉल्ड मैग्नीफाइंग लाइन. ठीक है, एंड यू कैन इंक्रीज द साइज ऑफ फॉन्ट्स एंड साइज ऑफ द विंडो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट. ठीक है, यूजिंग दैट लाइन, मैग्नीफाइंग लाइन, उसको इंक्रीज करके या डिक्रीज करके आप उसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर सकते हो. ओके, एंड इन द लेफ्ट साइड ऑफ दैट लाइन you will be having by default 3 views: slide view, outline view, and web layout view, a normal view. ठीक है, these are the 3 views which are appearing by default just in the left of the magnifying that one line. ठीक है, by clicking on that you can change the different views. अब देखो normal views पढ़ने. What are the type of views? I suppose I taught this one. ये हमने पढ़ लिया शायद. In the last class we read this one ना, views डिस्कस किया था या नहीं? Okay, I am repeating it, not a problem. Anyway, if it is completed, I have to revise only. Okay, the first view is normal view that display the slides in editing mode. If you want to do some editing, आपने slide show बनाया है और किसी particular slide के अंदर में कोई changes हैं, तो you have to open that slide show in normal view. डबल क्लिक करेंगे जब भी हम किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर, चाहे कोई भी एप्लीकेशन हो. वी आर राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, बट अगर वर्ड का भी डॉक्यूमेंट है, एक्सेल का डॉक्यूमेंट है, या किसी भी एप्लीकेशन का आपका फाइल है, उस पे आप अगर डबल क्लिक करते हो तो बाय डिफॉल्ट दैट इज ओपनिंग इन डिफॉल्ट व्यू, नॉर्मल व्यू. ठीक है, where we can do editing if the permission is there on the file,
we can do editing. ठीक है? Then second one is outline view. This view display only the text of the presentation in outline form, allowing you to work easily with the content. Outline view के अंदर में आपको टेक्स्ट के फॉर्म में इंफॉर्मेशंस दिखाई देते हैं, जैसा है वैसे ही दिखाई देगा, and there also you can do edits. ठीक है? Then slide view shows you just the slide and its content. It is easiest to use when you are designing your presentation slide by slide. अगर एक एक स्लाइड करके अगर आप डिजाइन कर रहे हो, then you have to view the slides in slide view. ठीक है? उसमें क्या होता है, स्लाइड को बड़े इजीली आप डिजाइन कर सकते हो. अंडरस्टूड? क्लियर है सबको? यहां तक सबको क्लियर है? तो बेटा दिस व्यूज ना ऑलवेज यू रिमेंबर. Then slide sorter view. That is also very important view, because sometimes we are having multiple number of slides in a presentation. In that case, we are unable to view all the slides at the same time. But slide sorter view provides the facilities to view all the slides at the same time in same window. छोटे छोटे टाइट के फॉर्म में, जैसे आपका नॉर्मल व्यू में लेफ्ट पैन में स्लाइड पैन के अंदर में आपके स्लाइड्स दिखते हैं छोटे छोटे फॉर्म में. इन द सेम वे in slide sorter view, all the slides will appear at the same time in same window. We can view all the slides at the same time in same window using slide sorter view. तो अगर आपको कोई पूछता है कि what is the name of the view in which we can view all the slides at the same time in same window, because most of the time this is impossible to view all the slides when the number of slides are more in any of the presentation. Slide sorter view is the answer. ठीक है? The next one is slide show. Slide show is the view in which we want to do the final show of the slides presentation. जब भी हमें किसी के सामने रिप्रेजेंट करना होता है, तो we are maximizing the slide. That is called the maximization of each and every slide one by one in front of anyone. ठीक है? तो ये आपका पूरा जो है एक्सटेंडेड व्यू देता है हर एक स्लाइड का. At a time, only one slide can open in slide show in maximized form. ठीक है? Then notes pane view. Last one is notes pane view. जब whenever we have inserted any speaker note in any of the slide and we want to see that speaker note view करना है या उसमें editing करनी है, तो you must have to open the slide show that presentation in notes pane view. जैसे ही हम ओपन करेंगे तो we are capable to see the speaker's note, बोले हुए जो नोट्स होते हैं रिकॉर्डेड किए हुए, या फिर the person who is creating this one slide show or presentation, उसके जो नोट्स होते हैं that is visible in that one. Okay, so I hope this is clear to everyone. अब देखो स्लाइड्स में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं. स्लाइड्स इज हैविंग 4 एलिमेंट्स: टाइटल, सबटाइटल, ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स एंड क्लिप आर्ट एंड पिक्चर्स. टाइटल most of the time we require, because every slide is individual one or specific one about a particular topic. So normally whenever we are creating a slide, जिस particular topic के बारे में हम बनाते हैं स्लाइड को या रिप्रेजेंट करते हैं उस टॉपिक को,
in the form of graphical representation and graphics form, तो वो जो टॉपिक होता है that becomes the title of that particular slide. ठीक है? Okay. Then second one is subtitle. It depends upon the subtitle. Entering subtitle depends upon the user जो बना रहे हैं, जो डिजाइन कर रहे हैं स्लाइड्स को. It depends upon them कि वो subtitle डालना चाहते हैं या नहीं डालना चाहते हैं. Sometimes it depends upon the topic also. टॉपिक के अंदर सब टॉपिक है कि नहीं है. तो if sub topic will be there, it required to be create subtitles. Most of the time the users are not creating. Okay, but it is totally dependent on your requirement. When drawing object, there we can draw or insert the objects. ठीक है, वो एरिया होता है specific, but you can have text also in that particular area. ऐसा नहीं कि that area is specified for this one drawing object only. It is not like that. But if you are using drawing objects, उसमें जो text use करोगे, text और if you are going to use text as well as graphics object, जैसे कोई आपने shapes insert किए हुए हैं या pictures insert किए हुए हैं, तो उनका जो कोलैबोरेशन है, उनका जो इंसर्शन है टेक्स्ट के साथ में, जैसे वर्ड के अंदर वर्ड रैपिंग होता है. ठीक है, जब हम सिंबल के साथ में किसी भी सिंबल के साथ में टेक्स्ट को इंसर्ट करते हैं, तो टेक्स्ट इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा एंड सिंबल्स और द पिक्चर्स आर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा. इन दैट केस व्हाट इज हैपनिंग, द टेक्स्ट इज नॉट एसोसिएटेड विद द ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, टेक्स्ट लिखना चालू करोगे तो ऑब्जेक्ट आपका छोटा सा है, फिर भी ऑब्जेक्ट के नीचे से वो टाइप होना चालू होता है. तो इन दैट केस इफ यू आर गोइंग टू यूज ड्राइंग ऑब्जेक्ट, ये अपने आप ही वर्ड रैप वाली जो फीचर है दैट इज एसोसिएटेड इन दिस वन, एंड यू कैन इजीली वर्क विद ग्राफिकल ऑब्जेक्ट एज वेल एज टेक्स्ट. दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस वन. ऐसे अगर आप टेक्स्ट बॉक्स यूज करेंगे बड़ा सा एंड यू आर गोइंग टू टाइप, दैट विल वर्क वेरी फाइन. बट टाइपिंग के साथ में अगर कोई पिक्चर आपने इंसर्ट कर दिया तो ऑटोमेटिकली द टेक्स्ट विल मूव हियर एंड देयर. ठीक है, दैट विल नॉट बी इन कंट्रोल. So in that case we have to use drawing objects. Clip art and pictures, that is a place, predefined place from where we are getting the predefined pictures for inserting inside the slides. ठीक है, that is helping us to get the picture online also. Then slide components used for reference. ठीक है, next one is slide components used for reference. The first one is handout, then speaker notes, then outline. ठीक है, handouts are the common compressed version of the slide of your presentation, and outline are the summarized version of slides that display only title and main text. तो आउटलाइन में आपको बेसिकली जो मेन फीचर्स होते हैं स्लाइड्स के, they are only appearing whenever you are going to open the slide in outline view. और हैंड आउट is the compressed version, मतलब पूरी की पूरी चीज दिखेगी आपको हैंड आउट के फॉर्म में. बट हैंड आउट का मतलब होता है जैसे बुक टाइप. ठीक है, किसी भी चीज को बुक टाइप में बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड हैंडआउट्स. उसमें भी समरी रहती है, बट दैट इज लिटिल बिट प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म. दैट इज इन लिटिल बिट प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म देन आउटलाइन व्यू. ठीक है, तो दैट इज आल्सो यूज्ड. देन स्पीकर नोट्स. During a presentation, a set of notes is required to add
the presenter. ठीक है, Impress allows you to create notes which are small images of the slide along with some explanatory notes. मतलब क्या होता है, स्पीकर नोट अगर आप ऐड कर रहे हो तो वो क्या होता है, explanation of that particular website or that particular topic which you need to explain properly. ठीक है, जिसमें कहीं पे आपको दिक्कत आने वाली है या कुछ भी होने वाला है, तो फॉर दैट वी आर क्रिएटिंग द बैकअप इन द फॉर्म ऑफ स्पीकर नोट्स. Then when the presentation should be shown, कब presentation का यूज होता है, तो एक होता है ऑन स्क्रीन प्रेजेंटेशन, दूसरा है वेब पेजेस फॉर वेब यूज. ठीक है, वी कैन प्रेजेंट द डेटा इन द फॉर्म ऑफ ऑन स्क्रीन प्रेजेंटेशन, यानी कि आप किसी सिस्टम पे which is not connected with net or which is not working in networking, मतलब शेयर नहीं कर रहे हैं एक सिस्टम से बहुत सारे सिस्टम पे हम शेयर नहीं कर रहे, दैट इज नोन एज ऑन स्क्रीन प्रेजेंटेशन. मतलब आप एक सिस्टम पे प्रेजेंटेशन दिखा रहे हो तो ऑल द व्यूअर्स are capable to see that presentation from the same source, they are not going to change the source. ठीक है, then web pages for web use. अब इसमें क्या होता है, in this case we are broadcasting the presentation with the help of internet and all. ठीक है, ऑनलाइन मीडिया के थ्रू, वेब के थ्रू we are using that presentation or anything to broadcast to so many people, and all the people are connected with web and they are accessing that presentation. The next one is overhead presentation. ठीक है, so we are using different kind of presentation to present the data in front of the viewers. ठीक है, then how to create a new presentation. For creating a new presentation always you have to, आप जैसे ही एप्लीकेशन ओपन करोगे तो ब्लैंक प्रेजेंटेशन बाय डिफॉल्ट ओपन होता है. अपार्ट फ्रॉम दैट आपका एक प्रेजेंटेशन हुआ पड़ा है एंड यू वांट टू क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन, यू वांट टू ओपन अ न्यू प्रेजेंटेशन. इन दैट केस you have to press Ctrl+N. This is the key which is universal key for opening a blank document in any of the application. किसी भी एप्लीकेशन में अगर ये प्रेस करोगे तो you are going to get the new blank application according to the application in which you are working. This is slides presentation software में आप काम कर रहे हो तो you will get a PowerPoint blank PowerPoint presentation. अगर आप स्प्रेडशीट में काम कर रहे हो तो you will get a blank sheet. If you are working in Word document तो आपका एक फाइल ओपन हो जाएगा. Okay, if you are working in this one video or audio software, so in that one new file will open. Okay, that is over creating empty presentation.
and we are getting different type of slides layout. Layout का मतलब होता है how the slide is going to appear on the screen. ठीक है, graphical arrangement or graphical what I will say graphical design of a slide is known as layout, and that is predefined in the system. वो पहले से defined होता है, only we have to select them. So by clicking on the slide, we are capable to open that this one slide layout window. ठीक है, अपने आप ही ऊपर में आपके मेन्यू बार में ओपन हो जाएगा या फिर राइट साइड में ओपन हो जाएगा. From there you can select any of the layout. Once you are going to click on layout, any of the layout that will be applied to each and every slide. ठीक है. Now running the presentation. For running the presentation, you have to click on task pane में मैंने बताया views होते हैं, उसमें slide show view होता है, वहां पे डायरेक्टली क्लिक करके कर सकते हो. और you can press F5 for running the F5 is the shortcut key for running the presentation in slideshow view. ठीक है. अब आपको क्वेश्चन आंसर्स करने हैं एंड बार बार मेरे बोलने के बाद भी आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करके यू आर नॉट सबमिटिंग. दिस इज नॉट गुड. यू शुड डू दिस वन. In the next class we will learn about the templates, slide templates. ठीक है, जैसे डॉक्यूमेंट टेम्पलेट होता है उसी तरह टेम्पलेट्स होते हैं and they are helping us to design the this one slide show according to our requirement. And there also we will learn animations also, how to apply animations on different object which we are using in slide show. ठीक है, तो ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सैटरडे करेंगे. And again I am requesting all of you to submit your projects individually on time. ठीक है. Okay, thank you for joining the class. If anyone is having any query, you can ask the query in the next class.